Howie, this is City 1016 podcast and तीन क्या मतलब सबसे पहले जो host of the podcast are of course Lokesh, Sid and me परीक्षित पाजी. आंखों में तो देखो. डर लग रहा है. बहुत टाइम हो गया. It's the first podcast, guys. Yeah. मुबारक. It's a good one. They chose the best for the first. Yeah, and actually I was just thinking on my way यहाँ पे. हाँ जी. We are actually in city also. Experience wise, the highest experienced like Sid and then Loki and then me, highest experienced jocks as well. Actually, Karish also, right? Karish also. Yeah, Karish yeah, also. In Correct. fact, more experienced than all of us. Really? On Yeah. city. On On city, no, Yeah, in yeah. terms of just radio, not Just city, radio, not yeah. old at city. Yeah. Yeah, correct. 20, Radio experience. 26 wise. years, yeah. Yeah, correct. नहीं correct. मैं तो अभी 5 साल पहले. मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ यार. मैं मतलब I want to make it very clear. Guys, ये दोनों है. I started when I was 2. हाँ, correct. मैं बस correct एकदम. So ये जब पैदा हुए थे तो क्या बोली थी दाई ने आगे क्या बोला था? ये रेडियो प्रेजेंटर हुआ है. मुबारक हो आपके घर में रेडियो आया. इसकी वो वाली लाइन है कि जब तुम लिक्विड फॉर्म में थे हम यूनिफॉर्म में थे. So this podcast of course is going to be unfiltered almost. This is going to be about a lot of city stuff, a lot of city presenters that don't usually you get to hear on the shows. And of course man, so पहला जो podcast का topic है, straight away let's get into it, is first habit or habits you guys picked up after coming to Dubai. After coming to Dubai. And you both came to Dubai Together. for city, right? For city. That's right. Together. है ना? After a couple of days, आगे पीछे 2-3 दिन आगे पीछे. We were put up in the same hotel actually. Huh. And I remember we used to go to Satwa to have dinner. You Oh remember my that? God. Because our hotel was like on Sheikh Zayed Road. Huh. So yeah, a couple of times actually we'd gone to Satwa to have dinner together. Yeah. हमने एक रूम में रातें बिताई. हमने एक रूम में रातें बिताई. Let's just put it that way. Before we get into the habits, मुझे पर्सनली पता है कि ये बहुत सारी स्टोरीज होती है, राइट? कोई भी कंपनी आपको बुलाती है, यहाँ पे होटल स्टे देती है. मैं और तरुण साथ में आए थे 2010 में, एंड हमारी भी बहुत सारी स्टोरीज है. हमारे उस वाली कंपनी ने जब हमको होटल में रुकवाया था. सो फर्स्ट सिट आपके साथ शुरू करते हैं. जब आप पहली बार दुबई आए थे, कौन सी होटल में रुके थे? ARN ने कौन सी होटल में रुकवाया था? कोई तो स्टोरी होगी तब से. देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ख्वाब जो दिखाए गए थे उससे ऊपर, उससे ऊपर +1-2 भी नहीं, +5 +6 वाले मेरे को ट्रीटमेंट मिला. नहीं. हाँ. So we were staying right now it's called the H Hotel on Sheikh Zayed Road. It used to be called the Monarch. Correct. At that point in time. And let me tell you another story. जब हम लोग आए यहाँ पे तो मेरे को फ्लाइट में चढ़ने से पहले I remember जो हम लोग की पुरानी बॉस थी Fiona, she had said कि I need all your details because somebody is going to be picking you up at the airport. Wow. एंड उस टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था. मैं तो मतलब आया था कि हाँ हो सकता है कि कोई आएगा छड़ा सा बंदा और लेके चला जाएगा. बट इट वाज द मरहबा सर्विस. No way. Which is the fanciest of fancy services. और दुबई पहली बार आए थे कि उससे पहले आ चुके थे? नहीं, उससे पहले मैं आ चुका था. तो I had seen the place. That's another story I will tell you later. But so everything was chalked out very, very, very well. And we were put up in Monarch, the hotel, and that was at that point in time, 13 years back, probably one of the newest hotels which were made up. And I had no idea that Alakesh and Lokesh, two of them were also there, and so yeah, it was just one of those things which was surreal. It was epic, dude. And तेरे साथ कोई story है hotel में? Because I'll tell you mine after. So the after same you hotel, finish. and you know, I remember we were given a time period of 3 weeks to look for an apartment and all that, and I couldn't really find an apartment. I remember Sid used to accompany me finding all the apartments and tracking all the deals and everything. So yeah, I mean, ARN was very kind enough to put us up in a very fancy hotel and like full royalty treatment we got, man. पता है मेरी तो सैलरी नेगोशिएशंस ही ऐसे चल रही थी. मेरे ईमेल पे सैलरी नेगोशिएशन ऑफिशियल ईमेल पे बस इतना आपको देंगे, इतना इंडियन रुपीस में होता है कन्वर्ट करके. तो मैं आ गया. मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स 1 महीने होटल में रुकवाया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया मेरे को और तरुण को कि आपको ना बिल्स खुद के खुद पे करने होते हैं. हम भावुक हो गए थे और सिड नोस दिस स्टोरी. तो हमको ना ऐसा था कि हम लोग मतलब ऐसे हो गए थे कि पहली बार टीम इंडिया से सब अलग अलग सिटी से जॉक्स आए हैं. हम आपस में, अरे तू मेरे रूम में आ जा, मैं खाना मंगा दूंगा. अरे तू तरुण के कपड़े मेरे रूम में. मैं कहा तरुण चिंता मत कर, मैं धुलवा दूंगा. भाई लॉन्ड्री का बिल मैं इंडियन रुपीस में सोच रहा हूँ पहले आने के महीने में, लॉन्ड्री का बिल 1100 दिरहम्स का भरा है. 1100 दिरहम्स का. आज तक सिड मजाक उड़ाता है उस बारे में. सतवा जाके
खाना खाया करते थे मुनार में रह No, but it's so true. It's so true. You know, and I think because at the time when we came, I think the exchange rate was around 14. And Really? No, Even but less, it, yeah. 11. It was about 11. even less. I remember the first one that the first month that I sent home, it was around 11. 11? Yeah, 11 and a half or something. Or that. So वही 12 का पहाड़ा आपके दिमाग में से हाँ, चलता रहता था. correct. So I remember I had gone to a hypermarket to buy water. Okay. हाँ. I couldn't tell the difference between normal water and sparkling water, so I ended up buying this sparkling अरे water का बाप bottle. रे. Say 17, 18 dirhams अरे. multiplied by 12. Oh, I mean, बाप रे. shooting pain on the left side. You know, of the मैं body. पेट्रोल पी लूंगा. वो सस्ता हुआ करता था. यार पता है एक और चीज जो लगती थी यार दुबई आने के बाद में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट महंगी वाला, यहाँ पे आई स्टिल फाइंड च्युइंग गम्स वेरी एक्सपेंसिव देन इंडिया. च्युइंग गम्स, इफ यू लुक एट च्युइंग गम्स, I haven't really paid attention. 3-3, 4-4 दिरहम, 10-10 दिरहम के वो आते हैं यार डब्बे, which is literally कितना 22 से अगर तू मल्टीप्लाई करे तो. तू खरीदता क्यों? मैं तो ये टेबल के नीचे से ही सीधा निकालो खाओ. एक और चीज बहुत महंगी है, इस बारे में बात नहीं कर सकते. Okay, let's talk about the habits you guys, like we all have picked up after coming to Dubai. I think so much has changed, yeah, Pari. So I remember like from Amul butter to peanut butter. हाँ. From my Oh. first car in India was Alto to my first car in Dubai was Audi. हाँ. I think there's like a drastic change that happens, you know, when you come to Dubai. And of course you pick up a lot of habits as What well. about you, Paji? Let me just put this on Oh camera. my God, I absolutely agree. 100%. हम पाजी, पागल हो गए हैं यहाँ पे. नैपकिन देखी नहीं है हमने क्या? नहीं, absolutely. Every one of us does that. एंड मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे को बहुत गालियां पड़ती हैं, मैं खाना भी विदाउट टिश्यूज नहीं खा सकता हूँ. हर एक बाइट के बाद इट इज like it's terrible, but it's a problem. Yeah, yeah, yeah. हमारी tissues And की. especially when you go back to India हाँ. and you don't really find tissues around. आप अपने Right. फ्रेंड के घर जा रहे हो, अपने you know relatives के जा रहे हो, tissues नहीं, and then they always taunt कि तू बड़ा NRI आ गया है, टिश्यू चाहिए देखो हर चीज के ऊपर. भाई होम डिलीवरी अब तो चलो यू नो आपकी एप्स वगैरह आ गई हैं, बट बी इन लाइक मिडिल ऑफ द टाइम्स जब पैंडेमिक से होम डिलीवरीज का बिजनेस इतना नहीं बढ़ा था एप्स का, वी वर सो यूज्ड टू होम डिलीवरीज यार. वी यूज्ड टू जस्ट कॉल एंड चटा ये भेज दो वो भेज दो, लड़का निकल गया. इट वाज अ थिंग. सिर्फ एक बोतल आपको मिल सकती है होम डिलीवरी के अंदर. Imagine. which is what Dubai is. Yeah. Yeah, dude. It's लबना पाता है. phenomenal. Yeah. 25 मिनट का बेचारा ऊपर दौड़ के आते हैं. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक पहली गाड़ी की बात हो रही थी, वी आर जेन्युइनली, मेरी तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ना वो विदाउट शॉक एब्जॉर्बर्स वाली इस ऑटो में बहुत अजीब सा लगता है यार. इंडिया अगर चले जाओ ऑटो में बैठ के तो कैसी हालत खराब होती है यार. So talking about the cars, you have a Camaro. Yeah. You started off from a Camaro. Correct. उसके बाद में change करके भी you बॉट taken a अनदर कमारो. मेरा एक्चुअली यही था पाजी, मैं मेरी ड्रीम कार वो थी स्विफ्ट. मैं वहाँ कमारो पहुंच गया था, उसने मुझे बहुत ठगा है. मैं विदाउट डाउन पेमेंट का बहुत ज्यादा किस्त भर रहा था. Like you were saying, Audi, Yeah, yours yeah. from Alto to Audi. I remember the very first thing जो हम लोग like Ritu and I came here together एक महीने के बाद में, तो it was very clear कि जो गाड़ी इंडिया में नहीं मिलेगी वो वाली यहाँ पे लेंगे. हाँ, correct. So right. जो ब्रांड वहाँ पे नहीं मिलता ना Yes, right. वो वाली लेंगे यहाँ पे. So and it I don't know what but उस टाइम पे it didn't make sense, but it was like हाँ ठीक है चलते हैं देखते हैं. And you are still a motorhead, you know, you still like, you are interested in cars and all that. I don't know anything about cars, okay, and I'm not even interested True in cars. that. I don't True even that. like driving. But like I'm thinking the first thing that I want to buy, the first car that I want to buy is like, I know that I want to look like I want to have a sports car and I want to have a convertible. So this is the one that's available. This is like I have to sell my kidneys, but buy it. And I don't know why. And then I didn't realize कि वो my father used to say कि you know हाथी को खरीदना एक बात है, उसको पालना दूसरी बात है. It's such an expensive car to maintain as well. And you know what Sid के साथ ये है कि he's a hardcore motorhead, and I think you've had an American muscle. I've had Yeah, that's- he all started of with my American cars I've been American. have been American. है ना? I've started with Charger. हाँ. Then I had a Chrysler 300, which हाँ. was a sedan, but Correct. luxury sedan. हाँ. But and now I have a Jeep Wrangler. अजीब रैंगलर. अब इसके भाई के उसमें चाबी रिंच लगी हुई है, रिंचेस लगी हुई है, दुनिया भर के गैजेट्स है उस गाड़ी में. सो अब जब तुम घर जाके ना नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, लेट्स से एन एस्टीम और अ स्विफ्ट, कैसा लगता है? So घर जाके ना first thing my dad will tell me कि अच्छा ये सामान लेके आना है. हाँ हाँ. तो 2 मिनट के बाद में ना he'll realize कि अच्छा तुम्हारा लेफ्ट और राइट का भी प्रॉब्लम चलेगा. मैं जाता हूँ. लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इज अनदर हैबिट.
यार the thing is कि वहाँ पे जाके roundabouts उल्टे पड़ जाते हैं. You're so भाई, right. The first thing, for 15 minutes, it's like मेरे को सिर्फ 15 मिनट दो, मेरे को एक बारी के लिए I just need to warp my head around it. उस दिन मैं ना लोग की एक वीडियो देख रहा था, एक पूना हाईवे का. वहाँ पे ऑफ कोर्स महंगी गाड़ियाँ, जी क्लास, जी वैगन, ये वो, एक गाड़ी लेन नहीं फॉलो कर रही थी. वहाँ लेन सिस्टम का कोई सिस्टम ही नहीं भाई. Lanes होती नहीं है वहाँ पे to begin with. I know, but Pune highway में it's like Sheikh Zayed road. Let's be honest, India is very nicely developed if the highways are there, but lane फिर भी घंटा कोई फॉलो नहीं कर रहा भाई. कोई नहीं करता. अरे इंडिया गेट के आसपास हमको अगर घूमना हो, हम यहाँ से सीधा यहाँ में जाते हैं. Another habit. Also, I feel, you know, with the cars, I felt it like in a couple of years when I moved to Dubai, that everyone was driving, and there's no concept of walking here in Dubai. You know, I mean, Dubai, of course, the climate is pretty harsh and all that, and it's not a very walk-friendly country. Now it has become, but back in the day, like 13 years ago, and I'm a complete walker. Like, I want to clock my 10,000 steps, not because I want to clock my 10,000 steps, but I love walking, right? And there was like it was so strange that, you know, I found myself going to the grocery wala in a car. बाजू में वो supermarket है, वो मैं उसके लिए गाड़ी निकाल रहा हूँ. And I say, what have I become, man? एक और चीज ना पाजी, ये बहुत होने लगे. आई फील एंड आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस. एक तो हम इंडिया में कौन से कपड़े पहनते थे? इंडिया में मैं तंद्रा की टी शर्टें पहनता था, याद है आपको? तंद्रा है ना. अब भाई रेड बुल की जैकेट्स पहनता है, F1 वाली. जो एक सबसे ज्यादा तैयार कौन हो गया हमें? ये like we, and it also because of our industry that we are in. If we are going out for an event, we need to look good, right? So कपड़े बहुत खरीदने लग गए हम यार. बहुत ज्यादा. इंडिया में नहीं I करते have ना shifted इतने into a कपड़े. bigger apartment so that I can store all my clothes and shoes. What is your story? कपड़े ज्यादा खरीदने लगे हो? Of course यार. But then now it's become a problem in my house. So the kids have started to grow up, and now वो अब इस एज में है कि वो तो अभी देखते हैं कि I have to see what Papa is wearing. I have to see what Mama is wearing. ठीक है, Mama is not in media, but पापा तो हर दूसरे दिन उनका एक नया जैकेट आ रहा है, एक नया शू आ रहा है, कहीं से कुछ कोलैबोरेशन हो रही है. They don't know the concept of collaboration, and they don't know the concept of this whole social media thing. उनके लिए तो कपड़े आ रहे हैं ना घर पे. उनके लिए तो है कि ये शूज आ रहे हैं, ये कपड़े आ रहे हैं, ये आपका ऐसा हो रहा है. मेरे को भी ना. बेटा देवांश, अगर पापा कपड़े नहीं गाड़ियां भी आती घर पे, कभी वो भी ले लो तुम. And I'm thinking कि मैं जब 12 साल का था, तब मैं स्कूल जाया करता था वो व्हाइट वाले पीटी शूज पहन के, नीचे से वो हरी वाली जो होती थी सोल. एंड तेरे को चाहिए नाइकीज. बाप ने नहीं पहने कभी. What's your story? Like, do you end up shopping a lot? I mean, yeah. So recently मेरे साथ कैसा है कि I recently realized कि मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ अभी, eventually वो मेरे childhood trauma से हैं. Like मेरे पास पहले बचपन में जूते नहीं होते थे स्कूल पहनने के. अभी उनको लोग स्नीकर हेड बोलते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ मैं स्नीकर हेड हूँ. बट यू नो एक वो होता है ना कि यार मेरे पास एक टाइम पे पैसे नहीं थे, अब जब आएंगे तो मैं सब खरीदूंगा. आई फील यू नो योगेश भी सेम है, हम भी सब सेम है, राइट? सो मैं मेरा वो ट्रॉमा अभी तक है कि मेरे पास जूते नहीं थे एक बार स्कूल जाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो माँ ने मेरे को जूते दिलाए थे मेरे को, तो मैं तकिए की जगह रख के सोया था. तो मैं कहता हूँ भाई अब इतने जूते लेने हैं ना मुझे. लाइक यू नो नाउ आई लाइक शूज एंड आई हैव बीन लाइकिंग. लाइक हमें बचपन से शूज पसंद है, बस अफोर्ड अब ज्यादा अच्छे वाले कर सकते हैं. पैसे आए हैं. हाँ करेक्ट. You're so right. I still remember मैं जो स्कूल शूज हुआ करते थे ना, जो वाइट फीट्स की जो बात कर रहे हैं. बाटा के लिबर्टी याद है किसी को? लिबर्टी एक्शन शूज हुआ करते थे. So we used to have one black pair and one white pair, okay? And we used to wear the same shoes to parties as well. We were not allowed like fancy shoes and all that. Yes, bro. So and in fact जो स्कूल सॉक्स होते थे ना, उनको वो स्ट्राइप्स वाले को हम फोल्ड कर लेते थे and we would wear the same socks. So you're so right, you know, like childhood में जो हम लोग नहीं कर पाए थे, because we all come from middle class families, right? Basically कहीं ना कहीं childhood trauma है हम सबका. Yeah, and I remember around 2014-15, there was a problem. I was going to Dubai Mall practically every weekend. I had become a shopaholic. Wow. Like a proper shopaholic. Like I would end up, and there's no space in my house to store stuff, but I would still go and buy stuff. So it's pretty problematic actually. What else do you think, Paji and Lokesh? क्या लगता है और क्या पिकअप किया होगा हमने? यार I think just the fact कि हम लोग patient हो गए हैं when we shifted to Dubai. Now when I go back to India, I'm not criticizing any place. I'm not criticizing the places that we've come from. Yeah. But the temperament of people out there is, maybe it's work related, maybe it's other things related, but the stress you can see on the faces. I'm not saying कि यहाँ पे stress कम है. Fair enough. But
एटलीस्ट एक लाइफस्टाइल हम लोग के पास में है Correct. या सबके पास में यहाँ पे है दैट वो वहाँ पे आई थिंक इट्स मिसिंग. लाइक फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे they come from school at about 2 बजे 3 बजे in the afternoon. In Dubai or in India? In India. Okay. And they're in their, I think, the 10th standard. वो आएंगे, खाना खाएंगे, and immediately, without even changing their clothes, they will go to their tuition classes. The tuition classes will finish off. There will be something else which will happen. That thing will finish off. उसके बाद में एक और दूसरी class होगी, which will be by the same class teacher जो has taken in school Yeah. lectures. वो 11 बजे खत्म होगी, and by the time the kid comes back, they are again sloshed. और सुबह अगले दिन सुबह again they have to start with the rigmarole 5 बजे से. वो बच्चा है वो 10th में, मतलब 14-15 साल का. And I'm thinking कि bro तू क्या कर रहा है? Also, मैं और उसके बाप को मैं जानता हूँ. हाँ. उसने घंटा का भी इतना काम या पढ़ाई नहीं करी. also I feel कहीं ना it comes down to the population. Like हर कोई हर किसी को काट, like that's the eventual thing, no? कि वहाँ पे एक जॉब के लिए आपके पास 50 options हैं. यहाँ पे we're a little laid back, right? Yeah, I think traveling is definitely Yeah. which I think most Desis pick up when they come to Dubai, because Dubai is such a strategically placed Correct. country. Big time. Correct. It's like pretty much the middle of the world. Correct. I mean, you should be telling us more about traveling. You're the ट्रैवलर. तेरा ठप्पा लगता है पासपोर्ट. I mean, I could never imagine covering so many countries if I was in India, and I think the money translation also, Yeah. like the conversion. Yeah. If Yeah. you're in India, it sounds bigger, but if you're spending like let's say 10,000-15,000 dirhams on a trip, it doesn't really. See, anyways, change that half much. of the trips that most of the people do go from Dubai because Emirates लेते हैं या Fly Dubai लेते हैं. True. Also, मैं हर बार किसी को every time traveling comes up, I always say this. Dubai आने से पहले मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था. So Dubai was the first place जिसके लिए मैंने अपना पासपोर्ट तत्काल में बनवाया था. एंड तत्काल में पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इंडिया में. एंड देन मेरा फर्स्ट स्टैम्प वाज दुबई, एंड आई स्टिल रिमेंबर यू टॉकिंग अबाउट द होटल. जब मैंने दुबई ऊपर से देखा ना, एंड माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप वाज ऑफ कोर्स दुबई, एंड मैंने जब दुबई ऊपर से देखा, आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड सेड जस्ट बी नाइस टू मी, बिकॉज आई हैव बीन टू अदर सिटीज इन इंडिया एंड आई हैव like had good experiences with city, like in India कोई दिल्ली है, भोपाल है, राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, and I was like just be nice to me, क्योंकि मैं भी वही सोच के आया था. मैं जितनी मेरी सेविंग्स थी which was 1 लाख रुपए, मैंने माँ को उस टाइम पे बोला था मेरी कि मम्मी या तो मैं डबल करके आऊंगा या उड़ा के आऊंगा. अभी तक यही पे 1 साल सोच के आया था, डबल भी हो गए, उड़ा भी दिए. No, I think there are so many things that kind of we pick up, especially from fancy brunches to fancy shopping to fancy cars to fancy traveling. In fact, we would love to ask you guys, if you had to like share any of those things that you have picked up while moving to Dubai, after you moved to Dubai, let us know in comments below, man. Yeah. So that's a wrap, and thank you so much for watching. And there wasn't anything much, but if you guys want to share anything, like, share, subscribe, and hit whatever needs to be the done. subscribe button. Subscribe. Subscribe. City 1016.